फ्रेंड्स, वेलकम टू उपासना's किचन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिश से एक नया डिश बनाएंगे और डिश का नाम है लेमन पेपर फिश और ये बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी है। तो फिश लवर्स, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 पीस फिश ली हूँ। अभी एक मिक्सर बाउल लीजिए, 2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालिए, 2 टीस्पून गरम मसाला डालिए, नमक आप आपके स्वाद अनुसार डालिए, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डालिए, 2 टीस्पून लेमन जूस ऐड कीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। और 1 टीस्पून चाट मसाला डालिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। अभी फिश को मैरिनेट कीजिए। अभी हमारा फिश मैरिनेट हो गया है, तो इसको 30 मिनट्स तक रख दीजिए। अभी एक पैन में तेल गरम कर लीजिए। मैरिनेट किया हुआ फिश को डालिए और इसको अच्छे से फ्राई कीजिए। एक साइड पक जाने के बाद दूसरा साइड पकने दीजिए। अगर आपको तेल कम लग रहा है तो थोड़ा सा और तेल ऐड कर सकते हैं। हमारा फिश फ्राई हो चुका है, तो अभी हम इसको एक प्लेट पे रख देंगे। अभी उसी पैन में 1 टीस्पून बटर ऐड कीजिए, इसको गरम कीजिए। अभी चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड कीजिए, चॉप जिंजर ऐड कीजिए और इसको 1 मिनट तक फ्राई कीजिए। एक बाउल में पानी लेकर उसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। अभी इसको 2 मिनट तक कुक कीजिए। 2 मिनट बाद 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कीजिए, 2 टीस्पून लेमन जूस ऐड कीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और 1 मिनट तक कुक कीजिए। अभी बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड कीजिए और इसको मिक्स कीजिए। इसके बाद हमारा फ्राई किया हुआ फिश ऐड कीजिए। फिश ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट तक कुक कीजिए।
अभी हमारा लेमन पेपर फिश एकदम रेडी हो गया है। आप इसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। इसका कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है और ये बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।